Hi guys, welcome back to the channel after the weekend. Hope you had a good weekend. So last class we have started with the last of the intraoral carcinoma or mainly the cancer topic which we have started, which is going on, and uske baad we'll be starting mostly pre-malignant lesion. I'm not sure which topic I'm going to start, but mostly I'm saying it's gonna be pre-malignant lesion. कुछ important उस हिसाब से मेरे को दिखा तो I'll be starting that. Okay. Now, last class we have started with undifferentiated nasopharyngeal carcinoma, of which जिसका एक histological type था, which is lymphoepithelioma, okay, which is more common. Then we have seen that non-keratinizing squamous cell carcinoma accounts for 75% of malignancy in nasopharynx. नेज़ोफैरिंग्स में जितने भी कार्सिनोमा होते हैं उनमें नॉन कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अकाउंट्स फॉर 75%. और फिर वो तो हम बता ही दिया आपको कि पिक्यूलियर हिस्टोलॉजिकल टाइप होता है लिम्फोएपिथेलियोमा, और वो इसलिए होता है मेनली बिकॉज दे हैव अ यूज एसोसिएशन, दैट कैंसर सेल हैज़ अ यूज एसोसिएशन विद टी लिम्फोसाइट्स. Then we have seen that mainly early 30s and 40s and maybe early 50s में दिखते हैं. मेल प्रेडिलेक्शन ज़्यादा होता है और इप्सिन वार वायरस से एसोसिएटेड होते हैं. कुछ साइंस और सिम्टम्स जो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं ये इस टाइप ऑफ कार्सिनोमा में, पहला था नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा एपिक्स्टैसिस दैट इज ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, देन डिस्पेजिया एंड फीलिंग ऑफ समथिंग इन थ्रोट की कुछ है थ्रोट में. Sometimes we can see lymphadenopathy also, unilateral or bilateral. Then we have seen that differential diagnosis also mainly जितने भी aggressive type of tumor इस region में होते हैं जैसे non-Hodgkin's lymphomas और aggressive salivary gland tumor of various type और rhabdomyosarcoma. But rhabdomyosarcoma is mainly seen in younger age, तो जब younger वाले होंगे उनमें considerate कर सकते हैं हम लोग rhabdomyosarcoma में. फिर हम डायग्नोस्टिक देखें, डायग्नोस्टिक वर्कअप इनका नेज़ल, ओरल और हेड एंड नेक एग्जामिनेशन करना है. फाइबर ऑप्टिक और मिरर एग्जामिनेशन सिर्फ नेज़ल लैरिंगोफैरिंग्स का नहीं होगा, नेज़ल वोल्ट का भी होगा. वी हैव सीन दैट. देन वी हैव सीन CT, MRI, पेट स्कैन, क्योंकि डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ट्यूमर मास उतना डिफ़िकल्ट है, और समटाइम्स जनरल एनेस्थीसिया इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. Then in this tumor, mainly in this tumor we have learned about the histopath mainly in this tumor. इसका histopath थोड़ा important है क्योंकि इसमें variants है. variants कौन से? keratinizing और non keratinizing type. तो जो obviously जो keratinizing होंगे उनमें हमको cellular bridging दिखेगी, keratin production दिखेंगे, और जो नहीं होंगे उनमें वो सब नहीं दिखेगा, हमको बस different pattern दिखेंगे polyhedral cell के. ठीक है. उसके बाद और एक चीज़ है जो लिम्फोएपिथेलियोमा है, उसमें हमको लिम्फोसाइट्स दिखेंगे इन्फिल्ट्रेशन में. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. So last class we were studying histopathology and we have dealt with that. Up to here we have dealt, I think. Immunochemistry will reveal cytokeratin. The connective tissue stroma is scant, मतलब कम होता है बहुत. Lymphoepitheliomas are infiltrated by large number of lymphocytes. Okay, that's all about histopathology. Now coming to the treatment plan. Okay. All lesions of this type are treated with radiotherapy alone or combined with the chemotherapy protocol. So these reason हम लोग generally surgery नहीं करते इनमें, और नहीं करते. They are mainly treated with radiotherapy or radiotherapy combined with chemotherapy. Dose range from 6000 centigrade to 7200 centigrade. Radiotherapy imparts a 99% tumor cell kill. The residual 1% of tumor cell, when represent a population of 10 to the 8, is composed of radioresistant or at least radiotolerant cell. The problem in particular with these carcinomas is that maximum tolerated dose causes remission. पूरा क्योर नहीं होता, they causes remission. तो वो जो 1% भी बचता है ना, that's not good. Now coming to prognosis and follow-up, the prognosis is very poor. The adjusted 5-year survival rate is 10 to 15%. Follow-up must be every 2 to 3 months over the first 2 years and then every 6 months. इसमें 2 to 3 months हो गया.
ठीक है. Consists of direct examination and minor fiber optic examination of the area, and CT, MRI, PET scan are required at the periodic intervals. That all for it, and that's all for today's class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.